आप सिंपली आर्टिकल 191 के लैंग्वेज पे आ जाएं, सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन आपको दरकार है। इससे मायने ये हुआ देयर इज नो फंडामेंटल राइट। आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा है, आप खुद अफेक्टी हैं, यही चीजें होनी चाहिए थी तो हम खुद कर देते। सिद्दीकी साहब ये सवाल लिख कर रहे हैं आप? पता नहीं हम तो बोल ही जा रहे हैं, आप हाँ करी जा रहे हैं। तो साथी खड़े, ये कोई काम नहीं करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4 ऐसे नहीं कहिए, पढ़िए, एक पढ़िए और बताइए। I will first read article 4. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. आप ये whole of the act को ultra vires कहते हैं या there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ठीक है चलें। Mr. Siddiqui. His lordship, article 4. Mr. Siddiqui, article 4. Please, lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes, and that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. सवाल तो हमारे सामने ये कि ये जो कानून है ये तो और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं हमारे सिस्टम को और आम आदमी की जिंदगी आसान कर रहे हैं। देखिए, मैं एक आपको मैं और वजाहत कर दूं। हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया। सुन तो लीजिए ना प्लीज, कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। आप इससे मुखातिब हो जाए ना। I'm with you. कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं। मैंने हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज, मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूंगा आइन पढ़िए। अगर आइन के इन अकॉर्डेंस विथ है, यहाँ तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे। वो ख्वाजा साहब चले गए, उन्होंने एक फंडामेंटल राइट का तस्करा नहीं किया। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 184(3) पे आ जाइए, फिर 191 पे आ जाइए, फिर आर्ग्यूमेंट्स करिए। बहुत बुरा कानून है, मगर उसके दायरे में लाइए। May I proceed? जी प्लीज। Article 4. I read, my lord. फरमाइए। To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the. Not go on to do, develop an argument. Well, I will. Allow me. No, why you read Article 4? Your lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your lordship. क्या साहब जरा प्लीज एक चीज क्लियर कर दें। आप मानते हैं कि ये बेहतरीन कानून है, यही होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि पार्लियामेंट के इख्तियार नहीं था। बिल्कुल 191 में यही प्रोपोजिशन। अब इसको जिस तरह माय लॉर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। 191 पढ़ ले, उसमें अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट में है, शैल नहीं है। इट इज नॉट द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इतना बता दें कि जो सब्जेक्ट टू लॉ है
क्या वो रूल्स, उनका स्टेटस उस पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से हायर है या लोअर है? दैट्स द ओनली My lord, I am indebted to my lord. This is the proposition. एक आर्टिकल 4 आप कह रहे हैं, दूसरा कौन सा आर्टिकल है वो पढ़िए ना सारे आर्टिकल, वारिस के ऊपर आ जाए ना फिर आप। आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10 आर्टिकल 10, sorry my lord, 9. ऐसे नहीं नंबर्स ना दें, बताएं ना। No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. आपकी कौन सी लाइफ लिबर्टी ले ली इस लॉ ने? सर हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं। वो मैं जानूं और यही आपका क्या ताल्लुक है? No, sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to do it, I am going to persuade your lordship this is not constitutional. तो बहुत ही नॉवल आपने आर्गुमेंट वैसे है। बड़ा जबरदस्त बहस की कि हमारे चीफ जस्टिस की पावर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 9 इफेक्ट हो गया है। Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the वैसे मैं Supreme Court. वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था। शुक्रिया। लोग ये ना समझ बैठे कि आपने मेरी वकालत कर Lord, I have to assist you the way the law in this country is चले developed. चलते हैं आगे ना। ठीक। वैसे सदीकी साहब, एक चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं। Yes. उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए। आपने वो बताया आइन को भी देख लेना पहले। आइन तो कहते आइन के देखे बगैर। आइन तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा सब कुछ। Sir, this is what I am saying. तो आप तो कहते हैं चीफ जस्टिस। No, I say. आप अभी तक ये डिफरेंस नहीं क्लियर No, I am. अब या आप अलाउ करेंगे प्रोसीड करने तो करूँगा ना। enforcement of rights of ना बड़े Sir, एक फोर हो गया, कौन कौन सी enforcement करना 9 के बाद No, 10. 10 में क्या है ये? 10 में कौन सा है? नो, ये तो No arrest person who is arrested shall be detained. इससे क्या ताल्लुक है इस बात से हमारी? सर मुझे प्लीज। नहीं ये नहीं आपके, मैं सुबह से शिक 1 से शिक 260 तक पढ़ूंगा नहीं, सॉरी, ये जो हमारा टाइम है ना, इस पब्लिक मनी, ठीक है? आप ये नहीं कहेंगे मैं जो मर्जी आर्ग्यू करूं, आप उसकी हमें रेलेवेंस बताएंगे। सॉरी, ऐसे नहीं आर्ग्यूमेंट्स होंगे। क्या साहब, जब आप मान गए हैं कि ये बेहतरीन कानून है, चीफ जस्टिस के इख्तियार जो कुली थे वो नहीं होने चाहिए थे, देवर उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ, अब उसके बियॉन्ड आप जाए, आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था, वो बता दीजिएगा। मैं नहीं मान रहा कि ये बहुत अच्छा कानून है, मैं कह ये रहा हूँ कि इसका ख्याल बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं कानून, आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुल्ली इख्तियार हो। मैं नहीं चाहता, आपने दिया रूल्स के अंदर। नहीं ओहो, आप उसको छोड़ दीजिएगा ना, हमने छोड़ दी सर, आपने रूल क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिडल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? बहुत यहाँ पे द पावर हैज बीन गिवन टू द चीफ जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। बहुत अच्छी बात है सर जो आप कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस आपको बहुत पावर दे रहा है। लेट अस हैव अ लुक एट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 तो देख लीजिए सर। एक सेकंड जरा इसका फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं बहस का। सिर्फ हमें पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि 184 में आने से पहले फंडामेंटल राइट्स वाजे कर दें, कौन सा वायलेट हो? लॉर्ड, योर लॉर्डशिप्स हैव हेल्ड दैट व्हेन ए law is made or action is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. तो स्कीम में कौन सी प्रोविजन बताएं ना सर मैं आपको, आप मुझे लागू करेंगे दे रहे हैं, इजाजत बताइए। The law, the constitution requires under the constitution, and I will read the relevant article subject to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This आपने हमने जो आपसे शुरू किया था बुनियादी हकूक की बात, अब वो आपने तर्क कर दी। मैं तो आप जवाब दो। नहीं, जवाब ना दीजिए प्लीज, आप आर्ग्यू कीजिए, हम आपकी आसानी पैदा कर रहे हैं, बाद में जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि आप देखिए, मैं भी वकील रह चुका हूँ, जब 6-7 सवाल आते हैं बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? अब आपने पहले जवाब दे दिया था, बिल्कुल कानून सही है,
मगर जब माय लॉर्ड ने सवाल दोबारा पूछा, अब आपने ठहर जाइए ना, जैसे विटनेस कहते हैं ना अगेन सेज, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आर्ग्यू आप कीजिए, आपका केस है, मगर बताएं बुनियादी हकूक कौन सा सलब हो गया ये बता दें बस। अगर आप ये अगर को एप्लीकेबल करने के लिए पहले हमें बता दें कि कौन से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना चाहते हैं जो इनफ्रिंज हुए हैं, पहले इस पे आइए, ताकि वाई नॉट 199 यही पावर हाई कोर्ट के पास है, वहां क्यों नहीं गए? सर मैं आपको नोट आई एम आस्किंग योर लॉर्डशिप टू रिकॉग्नाइज माय फंडामेंटल राइट गिवन इन आर्टिकल 9, 10, 10A। रेड सर मैंने पढ़ा आपके सामने, चलें बस यही आर्गुमेंट जी आपका। सर मैं पढ़ रहा हूँ आगे। नहीं आप बता ही नहीं रहे, कोई प्रोपोजिशन ही नहीं डेवलप कर रहे हैं आप। माय प्रोपोजिशन मुझे आप माय प्रोपोजिशन इज दैट the legislature is bound by the scheme of the constitution, and the constitution requires that जब हमने फैसला किया आपसे सवाल नहीं करेंगे। the constitution requires that the legislature will make its own rules. The constitution requires petition, ये आपने अभी बात की, मैंने नोट कर लिया। 3 different organs of the state हैं, they will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. और यहाँ तक पहुँचने में हमने बुनियादी बातें तो पता है ना, आगे बढ़िए ना। It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. ठीक समझ गए, अगला पॉइंट। And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. और जजमेंट है आप नोट कर लें, मैं सर जजमेंट पढ़ने में चाहूंगा, दिस सो फंडामेंटल क्वेश्चन, ये देयर आर न्यूमरस जजमेंट्स। ये इस बात का तय्युन करना जी आपके पास इख्तियार है, जैसे मंसूर शाह साहब ने जिक्र किया कि ये इख्तियार एक्सप्रेस होता है, या तो हम रेफरेंडम करा लें जहाँ हर मार्शल और डिक्टेटर को 98.6% वोट हमेशा मिलते हैं। अच्छा सुन लीजिए ना जरा, प्लीज तसल्ली रख लें। जी सर नहीं सुन, या हमें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, उसकी अक्कासी उनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट करें उनकी मर्जी है, वो उसकी अक्कासी करते हैं। हम यहाँ तो कोई पोल अगर हम इधर खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन इन फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये हक देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने बस 8, 9, 10 बस कोई आर्गुमेंट डेवलप कीजिए। हजूर ऐसे नहीं हुआ आर्गुमेंट। योर लॉर्डशिप इम्तियाज साहब एक दफा फिर एक चीज क्लियर कर दें, अगर ये कानून सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियार को डाइल्यूट करता है, आप समझते हैं कि ये अच्छी चीज है? ऑब्जेक्टिव अच्छा है, प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सेकंड, इसका मतलब है इससे आपके और पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, वो वायलेट नहीं हो रहा है, उससे इन्फोर्स हो रहे हैं। तो अब आइन को मद्देनजर रखेंगे कि नहीं? सुन तो लेना। अब आपका सिर्फ क्वेश्चन ये रह गया है कि जी ये बहुत अच्छी चीजें हैं, आप अनइलेक्टेड जजेस कर ले, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती थी, भले आप रिफ्यूज भी करें वो फिर भी बेबस है। चले हम आपकी ये भी बात बेबस नहीं है। एक सेकंड, अब आप बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली 191 पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब है नो फंडामेंटल राइट। मुझे अभी तक आपने ना आर्टिकल्स लिखवाने दिए हैं, ना मुझे सबमिशन करने दिए। बताइए प्लीज बताइए। आर्टिकल 4, 9, 10, 10A फंडामेंटल राइट जो है उसको हम इन्फोर्स करना चाहते हैं, सर वो पढ़िए प्लीज। सर मैंने आपको कहा है कि व्हेन ड्यू प्रोसेस इज नॉट फॉलोड इन मेकिंग ए लेजिस्लेशन by the parliament, forget about the objective, and if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then
the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. अब समझ आई आपकी बात। वो ये है कि कानून का ऑब्जेक्टिव तो शायद आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है ये हमें बना लेना चाहिए था, पार्लियामेंट ने क्यों बना दिया, ये सवाल है। ये yes. अब ऑब्जेक्ट is not access to justice fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid बात ही नहीं reasons. सुन रहे हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब का फिर वही कर रहे हैं। In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. And sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to say, declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution, that independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of, I'm speaking for myself, but putting it as a question to you, of whether it is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, 3 judges is okay with us, 5 judges is too much, 1 judge is too little? These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section Section 4. Tomorrow Parliament says ये एक law बना देती है जी, I don't know, family matters are to be heard by a bench of not less than 7 judges. Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था, वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा, वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखें जी उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है। Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Indeed, my lord. With respect, great, अगर देखें सिद्दीकी साहब, I have not, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें, आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाह रहा हूँ सर। फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके, आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को। With great respect to my brother,
independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. मैंने नहीं So, किया। ओहो, आपने कहा एक खाली तरीका second, ठीक नहीं अच्छा लॉ है। इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके टू अचीव सर्टन outcomes in cases and by constituting benches, that is a complete erosion of independence of judiciary. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, दुनिया भर में, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता। और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। या बैलेट होता है या रेफरल। कंट्रीज लाइक नेपाल, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी। चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी मैं बिठा दूं। ये चीजें, तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं इन चीजों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स के अंदर एक बात की जा रही है, आपकी जजमेंट अपनी है। जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें। आप इस तरह कीजिए कि आप अपने this दलाइल aspect अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। वर्ड आर्टिकल 191 में दूसरे लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है। It seems to me that even now if you go by the literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, there's a question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law